about what is comparable and comparator, and even we created this example. So what was it? Created a custom object. Shubham, Pojo classes. What are Pojo classes? Any idea? सर क्लास इज बेसिकली सर जो भी प्रोजेक्ट हम जावा में बनाते हैं वो क्लास में ही बनता है. क्या बनता है? क्लास इज बेसिकली नहीं Pojo class. I'm saying Pojo. सर, Pojo. नहीं सर पोजो क्लास का नहीं पता सर. ओके, इसका फुल फॉर्म है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट. ठीक है, कवर कर रखा है, वीडियो में देख लीजिएगा. फिलहाल पोजो क्लास ऐसी क्लासेस होती हैं: प्राइवेट फील्ड्स एंड पब्लिक गेटर सेटर्स. गेटर सेटर्स का आइडिया है? गेटर सेटर. नहीं सर, नहीं सर. ओके, तो जो ये सेकंड बैच की वीडियोस हैं उसमें कोड जावा पढ़िएगा, उसमें कवर हो जाएगा कि गेटर सेटर्स होते क्या है. मैं थोड़ा फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हेन वी क्रिएट एनी क्लास, सो वी शुड हैव अ प्राइवेट fields like private int i's price and private string brand. Thing is, if something is private in your class, you cannot access it outside of it, right? So to make it accessible, we create getters and setters. So get will get the value, set will set the value. Whenever you're going to call the set method, ultimately you're passing in some argument, and that argument will initialize the current class field. Same way, if I want to initialize brand value, so I need to call set brand. I'll pass some string argument, then this brand will initialize the class private field, that is brand here. So getter setters are public in the nature, and through these getters and setters we try to access the private fields of a class. So the class which has private fields or variables and public getter setter. These classes are known as POJO classes, plain old Java object. So what we are doing here, we have created a class, and later in our collection, in an array list collection, we try to add these classes in the collection. So what I did, I have created two constructors, one default, second one with the arguments, and I'm calling the argumented constructor here to initialize five battery objects. Once I have them, I'm initializing the array list class. There it is. So this is the class, sorry, constructor collection reference, and then reference dot add battery 1, battery 2, 3, 4, 5. So what I have a collection of batteries. I can simply say in simple words, now I have a collection of batteries. So how many batteries we have? 5 batteries. Then I'm trying to print the reference. Yes, Shubham. Getting this example? What I did here? Yes sir. Okay, so issue was when I executed this code. See, and tell me why it's happening. So I've executed the code and I'm getting this output. See, any idea why this is happening? Why I'm getting this weird output? This I've covered here. Getting this output, right? And this is our private field, public getter setter constructor. Then initialize the field or object of battery. Created a collection of batteries, and when I about to print, I'm getting this output. So thing is, when we execute this code like this way, so um, by default the compiler, okay, will call like this way: array list dot, there's a method which is present in string class. Okay, so compiler will convert this line 20 into this. Okay, see what we wrote here, just array list, but what compiler did, it calls the to string on the reference. So this happened here. And when we are calling toString, this toString coming from object class. Okay, this is coming from object class.
I would say after compilation. Okay, so now we need to see the object class then. So let's open the documentation, uh, or this one, let's say. So how to see the documentation of a class? Object Java doc. So we have a parent class object, and inside this class we have a method toString. There it is. See, this is a toString method coming from object class, and when you're trying to print anything, right? Anything in Java by using sysout. So this is what happens here. So if you notice, this is what it see the method returns string, right? And what Java returns? It returns this. If it is not clear, let me show you the source code. Just open it in your Eclipse. Object class from lang. When you open it, there it is. And if I say toString, see this is the method implementation or source code of the class. Sorry, method. So you can clearly see what it says. It returns get class, get name. That's how you will get your class name. Then at sign, then integer dot hack string hash code. And if you try to compare this with output, let me pick this output from here, and let's just pick any of it. Okay. Uh-uh. If I remove anything, uh-huh. So you will see that this is actually similar. It's coming from here. So this whole line get class dot get name returns you package name with the class name. Then at sign, it's here. Then this string something. This is actually coming from here. Okay, so it's coming from toString method. Any doubt here? Why we are getting this output? No? Okay, fine. So thing is we need to override this method. So I hope both of you knows what is overriding. So where we need to override? Inside this battery class here. So simply use the Eclipse feature, right click on empty space, then go for source, and here you will get generate toString. Click on this, and by default all the fields of your class will get selected, so no need to change anything. Just click OK, and now we have this implementation. So it will return battery, then square bracket. This is how toString should be implemented, but again this is not a hard and fast rule that this is the only way. This can be one way. It's totally up to you how you want to print your response, this response. So toString is implemented. Now if we call this, now let's remove this one. So see the output. Now it will be readable. Okay. So battery price brand A, battery price this 300, 400, 500. So that's how we can fix this weird output. We just need to override the toString method. I hope you guys are getting it. If no, please ask. Otherwise, let's move forward. At least say yes or no. Getting or not? Yes, sir. Okay, thank you. Fine, so that's how we get things readable. So what's the purpose of toString? It gives you readable object
or you can say if you want a string representation of Java object, you need to override toString method. I've already pasted that. Let's revise that toString documentation. So toString method used to give you string representation of Java object. Okay, returns a string representation of object. So in general, toString method returns a string that textually represents this object. The result should be concise but informative representation that is easy for a person to read. इसका मतलब सिंपल है कि टू स्ट्रिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं जावा के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में दिखाने के लिए, जो कि सिंपल और आसान होना चाहिए किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए. इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल सब क्लास ओवरराइड दिस मेथड. क्या लिखा हुआ है? इट इज रिकमेंडेड. रिकमेंडेड मतलब समझ लो यहाँ पर कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप कोई भी क्लास या सब क्लास बना रहे हो, अल्टीमेटली जावा में सारी क्लासेस सब क्लास है किसकी? टू ऑब्जेक्ट क्लास की. तो इट इज रिकमेंडेड दैट ऑल सब क्लास ओवरराइड दिस मेथड. तो क्या रिटर्न करता है ये? द टूस्ट्रिंग मेथड फॉर क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द क्लास नेम ऑफ द क्लास which the object is instance, the @sign that is character, this, and then unsigned hexadecimal representation of the hash code of the object. Okay guys, so that's what toString does. See everything ये मैंने लिखा, ये कहाँ से पिक किया मैंने? ये डॉक्यूमेंटेशन. सो जावा ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है सब चीज़ें. So the toString method of a class returns a string consisting the name of the class for which object is an instance, the @sign, and the unsigned hexadecimal representation of the hash code. खत्म. Okay, next point मूव करते हैं. Now how to sort. Okay, sorting पे आते हैं. Then we'll start map topic. So sorting की बात करें, so we have two ways, comparable और comparator. मैं comparable बताऊंगा, comparator को खुद करके आना है. अगेन इट्स अ होमवर्क नहीं करोगे तो मैं कंपैरेटर नहीं कवर करने वाला, सीधी बात. वो आप लोग खुद करते रहिएगा. सो फर्स्ट टॉपिक इज sorting. So sort, we all know what is sorting. Either it goes in ascending order or it can goes in descending order. ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया कि सॉर्टिंग पता है हमें, एक ऑर्डर में चीज़ें लेके आना, और वो हो सकती है असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में. दैट्स वन थिंग. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, how we can move further. So let's do one thing. Let's create a class in collection array example 3 with sort. Okay, ये सब हटाते हैं यहाँ से. So we have these elements, and if I want to print them, this out, let's say before sorting. So it goes like, let's just print the reference. So reference is array list, and if I execute, it says 1 10 4 9 2. That's fine. Now I need to sort them. Anyone knows how to sort the elements in collection? No? Okay, so there's a method collection. So there's a class collections. Okay, so collections is a class, collection is an interface. So this is a class. It contains a method sort, and you just need to pass your reference. And that's it. After this, you just need to print reference again, and you will get your sort elements. स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक मेथड कॉल करना कलेक्शन डॉट सॉर्ट, कुछ नहीं करना. अगर आपके पास रैपर टाइप से तो आराम से सॉर्ट कर पाएगा. रन एज एप्लीकेशन, हो गया सॉर्ट 1 2 4 9 10. ये था सिंपलेस्ट तरीका इंटीजर्स या स्ट्रिंग को सॉर्ट करने का. सिंपली आपको बस एक मेथड कॉल करना है, सॉर्ट मेथड फ्रॉम कलेक्शंस क्लास. कलेक्शंस एक्चुअली यूटिलिटी क्लास, और वो आराम से आपके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा. ज़्यादा इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हाट इफ़ यू हैव अ
कस्टम क्लासेस, ये तो सिंपल था सबसे, एक मेथड कॉल करना है, हो गया काम खत्म, कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको। व्हाट इफ यू आर यूजिंग कस्टम क्लासेस, जैसे कि बैटरी है, बैटरी में प्राइस और ब्रांड है। नाउ व्हाट आई वांट टू सॉर्ट दिस बैटरी ऑब्जेक्ट इन प्राइस ऑर्डर की, प्राइस में आप सॉर्टिंग कर पाओ, या फिर ब्रांड के ऑर्डर में, जो भी ए बी सी की सीक्वेंस में, तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो लेट्स डू दिस फर्स्ट। तो when when it's about custom classes, then we use comparable, used for custom classes, कैसे, let's see this. So let's do this again. Battery है ना यहाँ पे, array list sorting example with battery. Okay, so created a new class, this one, and I'll keep things simple like we have out here. Let's just jumble them. Okay, so now they are not in a sequence, right? And if I print them, right click, run as application, so I'm getting 100, 200, 300, 400, 500. अरे ये सीक्वेंस वाले क्या आ गया? ओके, क्योंकि रेफरेंस चेंज नहीं हुए, इनको चेंज करते हैं, 2 3 4 5. ओके, running again, so now getting 100, 500, 200, 400 and 300. अगर आप प्राइस की बात करो, मैं सिर्फ तो प्राइस के हिसाब से सॉर्टेड नहीं है, ये कुछ रैंडम नंबर्स हैं, 200, 4, 300. सो आइडिया इज नीड टू सॉर्ट दिस. सो व्हाट वी सॉ, कि अगर आप सॉर्ट मेथड कॉल करते हो तो एलिमेंट सॉर्ट हो जाते हैं, ये देखा हमने. तो लेट्स से, आप लोग क्लास में हो कि नहीं गाइस, मुझे पता नहीं चल रहा कोई है कि नहीं. यस सर। ओह चलो ठीक है. Yes, sir. बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है. ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉर्ट कस्टम ऑब्जेक्ट्स दिस टाइम. सो आई एम सेइंग बिफोर सॉर्टिंग. ओके, तो रन एज एप्लीकेशन, तो ये इसने प्रिंट कर दिया. नाउ टाइम टू कॉल कलेक्शंस डॉट सॉर्ट. सो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड किया है, ये हमको पता है सॉर्ट मेथड काम करता है. अब यहाँ पे मैं एरे लिस्ट रख देता हूँ, डन. और जैसे ये करा, एरर आना शुरू हो गई. ओके, इट वाज नॉट गिविंग एरर व्हेन वी वर यूजिंग हियर, राइट. सॉर्ट मेथड आराम से काम करा इसने, और कोई एरर नहीं आया. एरे लिस्ट में क्या था इस टाइम, इंटीजर्स थे. तो मैंने क्या कहा आपको कि व्हेन यू आर यूजिंग रैपर टाइप्स यू वोंट गेट एनी एरर, इट विल वर्क फाइन. बट व्हाट अबाउट हियर, let's hover the mouse and see. So it says the method sort list in the type collections is not applicable for the arguments array list battery. So something is telling about the battery stuff. So in Java, when you are about to use sort method, the very first condition is the type you are passing here. Okay, the type you are passing here in your collection generics, it should implement comparable interface. Okay, let me repeat again. We are trying to sort battery objects. Battery class is right here. This class is not implementing comparable interface. All because of that sort method giving error. If I see integer class, it is fine here. So if I open this integer class, you will see it is implementing comparable interface, and inside this we are telling it that what you have to compare, integer class. It's not just integer class, all the wrapper classes implement this. Let's see the string class. So I'll hover and string class, so final class string, and there it is. It says implements serializable interface and implements comparable interface, with which says string is the type which we have to compare or sort. I hope this makes sense that we are talking about some predefined Java classes, and all these classes implements comparable, and because of that they can be sorted. So that's the reason we were not getting any error when we called sort method on it. Okay, इसको लगे लिख लेते हैं, हटाओ इसको यहाँ से.
if I print this one, it prints here. And if we talk about integer class, this also implements comparable. But if you check your battery class, that class is not implementing anything, right? So that thing is missing. Comparable we talk about, it implements comparable, yeah, comparable with integer. But our class battery is not doing that. So thing is, we need to override the battery. Now override the comparable interface. Implement the compare interface and override it's one of its method. So let's do this. Implements comparable. And even before that, let's see the documentation, right? So if we talk about comparable interface, let's open this comparable. Open, and there it is. Compares this object with the specified object for order. Returns a negative integer, 0 or positive integer as this object is less than, equal to or greater than the specified object. Okay, so this line is actually important. This tells us about how comparable interface works. Okay, first line clearly says that it compares this object with what you have passed inside the argument. Which argument is talking about? This one. It contains only one method, guys, by the way. See, interface comparable, then lots of documentation, and there's a method compare to. So you need to override this method. Okay, okay, this is what it has, and it is telling some, documentation. This is not making any sense, so let's make it simpler. And it says compares this object with a specified object for order. This is about the method. इसको cut करते हैं. It tells you. Okay, compare this object. Now it is telling this integer what this int will return, right? We have a compare method. It takes some t, that is type, and returns a negative integer. Returns, इसको ऐसे दे देते हैं, इसको copy करके. Let me make it simplify you. कि how it returns values. Returns a negative integer. Returns a 0 or returns a positive integer as this object is less than. This means current class object. If this object is less than, if is equal to, if is equal to, and if this object is greater than the specified object. So that's how, guys, it works. Okay, so I've simplified the statement what was in the documentation. We need to understand this. Why? Because we have to implement this logic in our battery class object. So documentation says this method compare to method returns negative if current class object is less than, it returns 0 if both objects are equal, and compare to returns positive if current class object is greater than the specified object. Specified means the argument one. Maybe it's not making sense. Let's implement this here. So going back to the battery class, I'm saying implements comparable, and you have to give the type here. So what will be the type here? Battery. And then we need to override the method compare to. So hover and add unimplemented method. This is here. Okay. So it keeps saying this. Shubham, what is this keyword? What does this सर keyword दी do? दिस कीवर्ड जो है वो कंस्ट्रक्टर को रेफरेंस देने के लिए यूज किया जाता है. Okay, that's one of the use. That's correct. What actually this keyword represents? जो आपने बताया वो है इसको एक यूसेज कि इस काम के लिए यूज हो सकता है, वो हो सकता है और भी काम होते हैं. सो दिस कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? सर कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्लास का रिप्रेजेंट नहीं मे बी. करता वो. नो नो नो. खुशबू आप बताइए.
दिस कीवर्ड के बारे में क्या पता है आपको? जल्दी बताइए, 45 हो चुका है, 10:45। सर पता है दिस नहीं पता? कीवर्ड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। हाँ, राइट। सो दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ओके शुभम, जो हमारा करंट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है ये। यस सर। ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक गेटर सेटर जब बनते हैं हम लोग तो वी टेंड टू यूज दिस कीवर्ड। सो दिस ऑब्जेक्ट क्या है? ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो बैटरी ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस। तो दिस कीवर्ड इज इक्वल टू करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो हमें इसी कीवर्ड को यूज करके अपना कंपेरेटिव मेथड लिखना है। कैसे? स्टेटमेंट लेके आता है वहां से, प्रिंट से, ये वाला रिटर्न्स नेगेटिव और दिस। तो पहला लिखा हुआ है रिटर्न्स नेगेटिव इफ दिस ऑब्जेक्ट इज लेस देन दिस पे। ओके, थोड़ा सा मिस हो गया, ये रह गया, ये ऊपर भी रखना है मेरे को। लेस देन द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। इक्वल है तो बात ही खत्म, जीरो देगा। अगर ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड मींस द वन विच वी आर गेटिंग इन आउटपुट, दिस वन, सी वी आर गेटिंग दिस आउटपुट आर्गुमेंट। ओके, तो पहले लॉजिक देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिटर्न्स आर नेगेटिव, और बाय द वे इफ यू गाइस नोटिस, वो एरर चला गया जो यहाँ पे आ रहा था पहले बैटरी के अंदर हमारे पास एररलेस एरर दे रहा था, अब नहीं आ रहा क्योंकि बैटरी क्लास इज नाउ इम्प्लीमेंटिंग कंपेरेबल। द ओनली थिंग इज लेफ्ट लॉजिक इनसाइड योर कंपेरेटिव मेथड। लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। बस अगर ये तीन लाइनें समझ में आ गई जो मैंने अभी सिंप्लीफाई की हैं, क्योंकि एक लाइन में उन्होंने सब बता दिया। ये एक्चुअली इसका यू कैन से अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले क्या कहता है, रिटर्न्स आर नेगेटिव नेचर इफ दिस ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो दिस ऑब्जेक्ट मीन्स दिस। प्राइस की बात करें, प्राइस सेट करेंगे तो एक लॉजिक लगाते हैं, इफ दिस डॉट प्राइस इज, क्या लिखा है, लेस देन, ओके, लेस देन बैटरी डॉट प्राइस। बैटरी ये वाला आर्गुमेंट अगर ये है तो इट शुड रिटर्न -1। ठीक है। एल्स इफ जीरो को सबसे लास्ट में छोड़ते हैं, दूसरा इसको या फिर सीक्वेंस बदल देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है। दूसरा है रिटर्न्स पॉजिटिव इंटीजर इफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दिस ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो दिस ऑब्जेक्ट मतलब दिस डॉट प्राइस ग्रेटर देन बैटरी डॉट प्राइस, तो रिटर्न +1। बाय डिफॉल्ट प्लस होता है पर लिख दो, कोई इशू नहीं है। एल्स, अगर इनमें से कुछ मैच नहीं होता तो एल्स में जाएगा, और एल्स में रिटर्न 0। जब दोनों बराबर हो गए तो बात ही खत्म, ये कर दो, लॉजिक डन। बस ये करना था आपको। तो मैंने क्या करा, मैंने खुद से नहीं सोचा, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वही इंप्लीमेंट किया है सिंप्लीफाई करके, और कोई एरर एरर नहीं आ रहा, मतलब अपना काम इतना हो चुका। अब ट्राई करते हैं सॉर्टिंग विद बैटरी। ओके, सो वी हैव दिस क्लास बैटरी जिसमें हमने एक कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करा फ्रॉम कंपेरेबल इंटरफेस, और अब कोड को रन करते हैं। तो बिफोर सॉर्टिंग हो चुका है, आफ्टर सॉर्टिंग भी करके देख लेते हैं। ओके, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, और यहाँ पर इफ यू नोटिस 100, 200, 300, 400 एंड 500, वी आर गेटिंग अ सॉर्टेड कलेक्शन। हो गया, इतना था सॉर्टिंग में। बस इशू क्या होता है गाइज कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई टॉपिक तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है पर वो उतना उस लेवल पे लिखा कि कोई बिगनर समझ सके। सो वी नीड टू सिंप्लीफाई दैट। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, कहाँ से पिक किया, डॉक्यूमेंट से पिक किया है, कहीं और से नहीं। और एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बैटरी के अंदर जो ये कंपेयर टू मेथड ओवरराइड किया वो दिखा दिया। अब इसमें कोई डाउट या क्वेरी तो बताइए। एंड दिस क्लास इज नोन एज, कैन वी कॉल एज और नोन एज प्रोजेक्ट क्लास। कोई डाउट या क्वेरी, कुछ और जो भी है बता दो, अदरवाइज वी आर डन विथ कंपेरेबल इंटरफेस। इतना ही करना है आपको। इतना करने पर आपको एक सॉर्टेड एलिमेंट मिलेगा, वो भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स का।
earlier we were getting sorting in um, wrapper classes or Java predefined classes. Now we have sorted our own class. Okay, कोई query नहीं, so that's good. आपको समझ में आ चुका है, तो इसका मतलब आप लोग कंपैरेटर भी कर लोगे. सो कंपैरेटर इज फॉर होमवर्क. ट्राई करिए और कल मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा कि आपने कितना कोड करा है. अदरवाइज ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा. इट्स फॉर यू गाइस, इट्स नॉट फॉर मी. होमवर्क करके आइए, तब उस पर डिस्कस होगा. डिस्कस तभी होगा जब होमवर्क करोगे. नो ऑप्शन. ओके, सो दिस इज डन. सॉर्टिंग हो गया डन. नेक्स्ट इज मैप कॉन्सेप्ट. मैप है एक कॉन्सेप्ट जावा में, वो भी देखना है हमको. तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. सो मैप क्या होता है, उसके पहले जो मेरी पुरानी क्लास थी बैच 1 के साथ, उसको देख लेते हैं. मैप. सो इसके पहले हमने एक डायग्राम देखा था. कहाँ गया इसमें. बैठ. ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की है. वी हैव कवर्ड ऑल दिस ग्रीन बॉक्सेस. कुछ आई डोंट थिंक अभी स्टार्ट किया हुआ है ब्लू बॉक्सेस. ट्राई करिएगा. आई नो टाइम आप सही से मैनेज नहीं कर पाए. अब सजेशन कर दिया कि पहले जो कर सकते हो उसको खत्म करो. 2-3 घंटे का काम है. तो जितने ब्लू बॉक्स हैं, ये ब्लू वाली, ब्लू ब्लू, दिस वन ब्लू, इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा, प्लस द ग्रीन वंस. ओके. ओके, सेम फॉर यू शुभम. कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो ओके क्लासेस हैं उनको फॉलो अप करिए. कोड जब आपको आती है तो इशू नहीं होना चाहिए. होता है तो कोई बात नहीं, ओके करेंगे कल. और आज आराम से ही सारे काम खत्म करिएगा. Okay, so we are starting map. So this is the diagram, you can say hierarchy of map interface. So at the top we are getting map interface. So map interface क्या होता है? It works with key and values. इसमें key और value काम करते हैं. और बाकी डॉक्यूमेंटेशन में वापस लिखने नहीं वाला. Already we have. So let me pick from there. There it is. So map interface में it's an interface, right? And it provides lots of features in sense of what you can say key values. तो that's why we don't count it in collection framework, क्योंकि collection में key value का concept ही नहीं है. तो इन्होंने एक concept ऐड किया की वैल्यूज का. होता क्या है इसमें, एक ऑब्जेक्ट होगा जो की रिप्रेजेंट करेगा और एक ऑब्जेक्ट होगा जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. An object that maps keys to values. A map cannot contain duplicate keys. Definitely अगर key है तो definitely duplicate नहीं होगी. And each key can map to at most one value. एक की एक ही वैल्यू से अटैच होगी. ऐसे नहीं कि आपने 2 की डाल दी तो होगा. डुप्लीकेट तो अलाउड है नहीं, इसलिए लिखा हुआ है. The map provides 3 कलेक्शन व्यूज. अगर आपको कलेक्शन को चेक करना है कि आपका कलेक्शन किस किस टाइप का है, सो यू कैन व्यू दिस एज अ की और वैल्यू और बोथ. तो जो आपकी कीज हैं आप सिर्फ और सिर्फ की देख सकते हो. नेक्स्ट है सारी वैल्यूज देख सकते हो. और तीसरा की वैल्यू एक साथ देख सकते हो. सो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. 3 कलेक्शन व्यूज. सेट ऑफ कीज, collection of values, let me highlight them, set of keys, collection of values, and set of key value mapping. Okay, so these are 3 different views for your collection. क्योंकि सेपरेट तो हम कलेक्शन कह सकते हैं ना. अलग अलग तो अगर की वैल्यू साथ में है तो वो कलेक्शन नहीं है, पर अगर सिर्फ कीज है तो हाँ ये कलेक्शन है. वैल्यूज है तो वो कलेक्शन है. और की वैल्यू एक ही ऑब्जेक्ट में डाल दिया तो वो भी कलेक्शन बन सकता है. और वी कैन रिप्रेजेंट दैट वैल्यू एज अ कलेक्शन. तो that was just an idea of what map interface is. It's all about key values. Next, interfaces के अंदर methods भी होंगे, तो वो चेक कर लेते हैं अब. तो इसमें methods हैं काफ़ी सारे, वो भी देखते हैं. So these are methods from map interface. So CRUD operations के लिए put, जैसे अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है मैप में, so we have a method put. इसमें add method नहीं है, इसमें put method है. बहुत सारे मैप एक साथ ऐड करने हैं तो put और. कोई की चेक करनी है कि की है कि नहीं तो कंटेन्स की. लाइकवाइज इफ वी नीड टू चेक वैल्यू, सो वी हैव अ वैल्यू कंटेन्स वैल्यू मेथड. क्लियर करने के लिए क्लियर, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या की गेट करना है तो गेट मेथड इज एम्प्टी वेदर दिस मैप इज एम्प्टी और नॉट. रिमूव करने के लिए इधर वी कैन गो फॉर की और वी कैन गो फॉर की विद वैल्यू. दैट मीन्स हियर वी नीड टू डिफाइन बोथ की एंड वैल्यू, देन ओनली दैट ऑब्जेक्ट गेट्स रिमूव्ड.
Otherwise, you can just pass a key. If that key is there, it will get removed. Replace, if you want to remove any value particular to that key, so you can also do that. Then size, the number of elements inside the map by we can see by using size method. Okay. Next is iteration. अगर आपको iterate करना है, how to iterate over the collection. So we can go for, अगर सिर्फ वैल्यू शो करनी, जैसा अभी यहाँ पे बात की कलेक्शन व्यूज के बारे में, तो तीन व्यूज हमारे पास, की वैल्यू ऑन बोथ. सो यहीं पे वो चीज़ डिफाइंड है कि अगर आप सिर्फ वैल्यूज देखना चाह रहे हो, तो वैल्यूज के लिए क्या यूज करेंगे आप लोग, values method. If you want to check only keys, so key set, and if you want to see both key values, so entry set. So that's how you can iterate over the map. So ये सब methods हैं map interface की. इशू क्या है कि ये map है और map है interface, you cannot create its object, so we need to go one level down and check this hash map. Hash table is for homework, try करिएगा कैसे होता है. We'll cover hash map in our class. hash map के खुद के बहुत सारे features हैं and let's see them. So now we are talking about HashMap class. Because we cannot create object of map, so we need to go for one concrete class which actually implements all these methods which we saw in previous image. So public class HashMap key values extends one abstract class and implements map interface. Okay, this is clonable and serializable. Hash table based implementation. That means HashMap is based on hash table. Hash table is from data structure. So all the classes in collection are defining or giving the implementation of data structures. Permits null values and null keys. That means you can have null values and even null key. And it is unsynchronized. That means it does not support multi-threading. So if you try to use this class in a multi-threaded environment, you won't get correct outputs. Output will get messed up. And there's a term we tend to call this legacy class. So it means old classes which were part of Java 1.0. When Java was published, when it was the first version of Java, so these classes were there: hash table, vector, dictionary. So all these are known as legacy class. Okay, it was just overview how it works. Now let's close all this, U2, and let's create a hash map example. So new class hash map tester. Okay, main method. So let's create instance of hash map first. Hash map. So now we need to give key and value. So key can be anything. So I'm taking it wrapper type of integer, and let's say we are using values. Again, it is not predefined. You can use it anything whatever you want. Hash map equals new hash map. Okay, done. Now time to add elements. So how do we add elements inside it? By using put method. No more add. So put needs key and value. So I'll give 1 as a key and a as a value. And let me repeat this 4 or 5 times. So B, C, D, E. And we have keys. So let's make it 2, 3, 4, 5. Okay, we have elements here. How do we print elements? Just go for the reference. Just say sysout and print hashmap. Done. Right? And if I run this code, you will get some output in curly braces. Collection represent in square brackets. Here it represents in curly braces. And you can see 1 equals to A, 2 equals to B, 3 equals to C, 4 equals to D, and 5 equals to E. Okay, let me jumble them. Okay, run this code again, and let's add. Okay, so why I did that to show you is it does not support sorting order, because earlier it was just 1 2 3 4 5. They were small numbers, so it was keeping in same order. But as soon as you go, you will see they are now random. 1 2 3 99, then 4, then 5, then 7.
So it's not sorted. It's just random numbers. So it does not support sorting. So that's one thing. Can we have null key and as null values? So null here null. Both are null. And if I execute this code, yep, it is supporting. So no error while working with null values. So HashMap supports null key and null values. Okay, so this is about HashMap. So what you guys have to do when you go back, first of all, do the comparator object or comparator example. Okay, do this thing, comparable stuff, then comparator class, how it works, figure it out, and next homework is try to iterate over the map by using I don't have created this. Okay, let me create homework section here. First homework is write example for comparator. So it will be similar to what we saw in comparable. So it's interface, write example, and next um, try to print keys, values, and value from map interface. Okay, try this out. पहला आपको कंपेरेटर इंटरफेस का एग्जांपल लिखना है, पढ़िए क्या होता है और उसका यूसेज क्या है, कहाँ यूज हो सकता है। दूसरा, फिर जो आपने मैप अभी पढ़ा, हैश मैप, इसमें हमारे पास तीन व्यूज हैं, कीज प्रिंट करने के लिए, वैल्यूज प्रिंट करने के लिए और की वैल्यू दोनों प्रिंट करने के लिए। तो ट्राई करिए, गूगल करिए, डॉक्यूमेंट पढ़िए, आई डोंट केयर, कोई और वीडियोस है वो देख लीजिए और ट्राई करिए कि ये चीज़ है कि नहीं। मेरे पास अभी मैंने अभी तक कलेक्शन का वो वीडियो नहीं बनाया तो उसमें आपको नहीं मिलने वाला है, तो कोई भी बाहर की वीडियोस देख लीजिए, आई डोंट माइंड, पर इनके एग्जाम्पल कल करके लाइएगा, अदरवाइज ये टॉपिक स्किप कर दूंगा, मैं सीधी बात कह रहा हूँ मैं। ये अगर एग्जाम्पल नहीं है आपके सिस्टम पे तो ये टॉपिक स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सॉर्टेड मैप और ट्री मैप और कलेक्शन खत्म। तो जो होमवर्क है वो आपको करना है, अदरवाइज वो टॉपिक स्किप हो जाएंगे। तो एनीथिंग एल्स यू वांट, एनी डाउट और क्वेश्चन, प्लीज आस्क, अदरवाइज वी आर डन फॉर द टुडेज क्लास। We still have like 2 days in this week, 9 10. So tomorrow we will wrap up collection, and then we will see what else we can discuss, or we can go over and topic and revise maybe anything, maybe core Java or servlet, whatever. So then we will see what else we can do. Any question? No, sir. Okay, Khushbu. No question.